today's event, Session 1. We welcome you all to this wonderful gathering and look forward to sharing this enriching experience with each one of you. It is a privilege to be a part of this occasion and we hope you enjoy the insightful sessions that await us. Let's make this event memorable together. Shubham karoti kalyanam arogyam dhan sampada satru buddhi vinashaya deep jyotir namaste. On this auspicious occasion, we commence by lighting the ceremonial lamp, symbolizing the dispelling of darkness and the illumination of knowledge. Let us invoke the blessing of Goddess Saraswati, the embodiment of wisdom, learning, and culture. We now invite our esteemed dignitaries to light the ceremonial lamp, signifying the start of this enlightening event. I would request all the students who are going to recite the Saraswati Vandana to join us on the stage. शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा Dakshi, disclosing the ancient knowledge system and heritage of India, is not just an organization. It is a vibrant movement dedicated to reviving and disseminating the profound wisdom of our ancient Indian traditions. Our mission transcends conventional boundaries, aiming to unravel misconceptions and illuminate the richness of our cultural heritage. Dakshi did not just confine its efforts to the academic realm. The team met with influential figures, including the former Law and Education Ministers of India, spreading the essence of the project. Dakshi has embraced the digital age, using social media to disseminate ancient Indian knowledge and garnering support from enthusiastic volunteers nationwide, DU and JU. And let's not forget the commitment to scientific research and scriptures, a promise to revive the culture of knowledge, one step ahead for Vishnu Guru Bharat. Dakshi, founded on the auspicious occasion of Utpanna Ekadashi, during the month of Margashirisha, Vikram Sampat 2079, will hold this year's event earlier on the day of Utpanna Ekadashi due to exam coinciding with the original date. Dakshi's anniversary program, Gyānparv', the Festival of Knowledge, is celebrated on the first day of Chaitra every year with a different theme. This platform promotes engagement with India's rich intellectual and cultural heritage. Even the motto of Dakshi
is culture of knowledge, or to say, Sanskriti Gyan Ki. Now we will move forward to introduce the panel. It is my privilege to introduce the distinguished member of our panel today, Professor Dr. Meenakshi Jain ma'am, an acclaimed historian and Padma Shri awardee is our esteemed chief guest today. She is a former associate professor of history at Gyānparv' College, University of Delhi, former fellow of the Nehru Memorial Museum and Library, and former member of the Indian Council of Historical Research. She is currently senior fellow of the Indian Council of Social Science Research. Her extensive research in cultural and religious history has contributed significantly to our understanding of medieval to modern India. Her works such as Flight of Deities and Rebirth of Temples and the Battle for Rama continue to inspire scholars across the nation. In 2020, Dr. Meenakshi Jain received the Government of India Award, Padma Shri Award, in recognition of her contribution. इतिहास की धरोहर को सजीव करने वाली और सांस्कृतिक चेतना को दिशा देने वाली डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी का ज्ञान और दृष्टिकोण हमें अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ता है। सदियों की गाथाओं को संजोकर वर्तमान में प्रेरणा देने वाली आपकी लेखनी हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य निधि है। May I now have the honor of giving the introduction of our respected principal sir, Professor Dinesh Khattar. Professor Khattar is an alumnus of the Hindu College and a gold medalist in both BSc and MSc examinations of the Delhi University. He is a recipient of the prestigious Professor Ram Bihari Gold Medal, Dr. Radhakrishnan Memorial National Teachers Award, Dr. APJ Abdul Kalam National Dedication Award, and many more. Professor Khattar has authored more than 20 books, with 2 books on abstract algebra. He has been a member of the Academic Council of the University of Delhi, several committees of the University Grants Commission, and research group on ancient Indian mathematics. Now I would like to introduce the visionary and director of Dakshi, Mr. Badoria. He is a graduate of Delhi University from BA History Honours from Kirori Mal College, currently pursuing his master's degree in history from Delhi University itself. He hails from Gwalior, Madhya Pradesh, a poet and a scholar. He is also author of renowned book Shudra Ek Divyavan. We are deeply honored to have them us today. Thank you so much. Thank you so much. Now I would like to invite our respected principal sir to felicitate Professor Dr. Meenakshi Jain for her invaluable contributions. Now I would request Akshit Badoria to felicitate our respected principal sirs whose unwavering support and visionary leadership continue to inspire and guide us for the excellence and for the season.
We also request our executive member, Mr. Amit, to felicitate our founder, Mr. Akshat Kumar Bhaduria, for his relentless dedication towards Dakshi's mission. I now invite Mr. Akshat Kumar Bhadoria to present the objective and visions behind this scholarly initiative through the proposal Gyānparv'24. Additionally, he will introduce our esteemed CEO and announce the theme of this year's Navchetna. सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। इसी के साथ यहाँ पर बैठे सभी महानुभावों को, प्रोफेसर मीनाक्षी जैन को, प्रिंसिपल सर प्रोफेसर सती को एवं हमारे यहाँ जो वरिष्ठ अध्यापक बैठे हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करते हैं। बाकी आप सभी लोगों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आप यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इस गरिमामयी उपस्थिति में आपके और मैम के गरिमामयी उपस्थिति में हम ये कार्यक्रम करा पा रहे हैं। वैसे तो दाक्षी का जो इंट्रोडक्शन है वो हमारी इंग्रेजी ने बहुत अच्छे से दिया है, पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में दाक्षी का जो कार्यपत्रिका है जो कि दाक्षी ने 2 साल में किया, ये दूसरी वर्षगांठ हम उसको मना रहे हैं, और दाक्षी ने 2 साल में क्या अचीव किया है उसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। दाक्षी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास करता है। एक ऐसा आंदोलन जो आज से 2 वर्ष पूर्व सन 2022 में विक्रम संवत 2069 में शुरू हुआ। यूं तो इस आंदोलन के शुरू करने के पीछे का विचार आपके इसके नाम मात्र से ज्ञात हो सकता है। दाक्षी प्राचीन भारतीय ज्ञान में न केवल धर्म और दर्शन की बात करते हैं, अपितु विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, पाकशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, गणित, साहित्य, इतिहास समेत सभी प्रकार के विषयों पर विचार विमर्श करता है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि अपार ज्ञान, उस ज्ञान से ओतप्रोत ग्रंथ और उन ग्रंथों को लिखने वाले ऋषि मुनियों की भरमार हमारे इस देश में हमें देखने को मिलती है। हम उसी ज्ञान को आज के समाज के लिए कैसे प्रासंगिक बना सकते हैं, उस कार्य क्षेत्र में दाक्षी कार्य करता है। दाक्षी प्राचीन भारतीय ज्ञान को आज के समाज में समस्याओं को हल करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग प्रशस्त करना चाहती है, चाहे फिर वह समस्या प्रकृति से जुड़ी हो या फिर वो समस्या समाज से जुड़ी हो। हमारे इस प्रयास में हम उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं जहां हमारे पूर्वज हमें पहुंचाना चाहते थे। हम इस राष्ट्र की ज्ञान की संस्कृति, जो कि इस राष्ट्र का एकमात्र आधार है, उसको पुनः स्थापित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पुनः लोग पढ़ें, ज्ञान को ग्रहण करके शास्त्रार्थ करें और अपने मानकों को तर्क के आधार पर स्थापित करें। दाक्षी का ये विचार बड़ी दक्षता के साथ समाज और राष्ट्र हित में रखा जाए, हमारी ऐसी आशा है। दाक्षी सनातन के रक्षण की नहीं, संरक्षण की बात करती है। सनातन अमर है, उसका रक्षण स्वयं ईश्वर करता है। उसे हमारे रक्षण की नहीं, संरक्षण की आवश्यकता है, और उसका केवल एक ही मार्ग है, वो है संस्कृति ज्ञान की। इसी कार्य क्षेत्र में दाक्षी पिछले 2 वर्ष से अपना कार्य बड़े ही निष्ठापूर्वक कर रही है। दाक्षी की स्थापना से लेकर आज तक दाक्षी के कार्यकर्ताओं ने लगभग 30 से अधिक रिसर्च पेपर, 50 से अधिक रिसर्च आर्टिकल, 100 से अधिक छोटे छोटे पत्र प्रकाशित किए हैं। इसके उपरांत 15 से अधिक प्रतियोगिताएं, कई सारे लेक्चर, सेमिनार समेत विचार विमर्श के लिए शास्त्रार्थ के आयोजन किए हैं। ज्ञान पर्व के इस दूसरे संस्करण के लिए विशेष रहा दाक्षी का नवचेतना, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़े सुंदर रिसर्च पेपर्स लिखे। दाक्षी गत वर्ष में तिरुवनंतपुरम महाविद्यालय समेत कई अन्य महाविद्यालयों में अपने आप को स्थापित करने में समर्थ रहा। इसके उपरांत दिल्ली विश्वविद्यालय समेत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे समेत कई और प्रतिष्ठित संस्थानों में दाक्षी के कार्यकर्ता जुड़े। दाक्षी के कार्यकर्ताओं ने प्रकृति संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम भी किए, जिन्होंने हमें भारतीय जवानों को, वीरों को समर्पित किया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बड़े ही सुंदर रिसर्च पेपर द टेम्पल इकोनॉमी को प्रकाशित किया। ज्ञान की संस्कृति को कैसे रिसर्च के माध्यम से आज के समाज से जोड़ा जाए, और इस क्षेत्र में दाक्षी अपना कार्य करने का पूरा प्रयास कर रहा है। ऐसा ही दाक्षी भारत के सभी युवाओं समेत जन गण से यह आग्रह करती है कि इस ज्ञान की संस्कृति का संरक्षण में हमारा समर्थन करें और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप सभी यहां पर आए और आपकी उपस्थिति से ये सभा करना होगी। इसी के साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट इसी के साथ मैं करना चाहूंगा। हमारे इस वर्ष का जो नवचेतना जो कि हमारा एनुअल एकेडमिक इवेंट होता है जो कि चैत्र के प्रथम तिथि को होता है, उस नवचेतना का इस बार का टॉपिक जो कि हम ज्ञान पर्व पर रिलीज करते हैं वो इस प्रकार रहेगा। इस बार का हमारा नव चेतना का जिसमें कि रिसर्च पेपर कंपटीशन होता है, क्योंकि हमारा दक्षी का आधार ही है रिसर्च। तो इस बार का नव चेतना का टॉपिक रहेगा रीडिंग इमेजेस, सीइंग टेक्स्ट, द सिटी एंड फॉरेस्ट इन एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड आर्ट। तो इसी के साथ हमारे एक और जो कि ये दाक्षी चलती है हमारे कार्यकर्ताओं की लगन से, उनकी निष्ठा से। तो इसी के लिए मैं अमित जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। ये हमारे वॉलंटियर ऑफ द ईयर और इस अगले वर्ष के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर नामांकित किए गए हैं। बहुत ठीक है, इसी के साथ हम आज की सभा का प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं अमित गरीब महाविद्यालय तृतीय वर्ष का छात्र। साथियों, आज दाक्षी का दूसरा साल समाप्त होने जा रहा है। ये दाक्षी एक विचार के तहत शुरू हुई थी। आज ये बड़ा ऑडिटोरियम देख के हमें लग रहा है कि हमने 2 साल में कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारा मोटो यही है कि पथ पे निरंतर चलते रहना है। आज हम इतने सारे कॉलेजेस, स्कूल तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ आज मुझे याद है जिस दिन हमने ये विचार रखा था, हमारे फाउंडर जो है अक्षित जी, उनके साथ ये विचार रखा था, तो इस विचार के साथ हमारे साथ उस समय करीब 4 से 5 लोग थे। आज जब हम एक दाक्षी का संस्था देखते हैं तो देखते हैं कि आज इतना बड़ा ये हो गया है। तो ये इसके लिए मैं अपने जितने भी कार्यकर्ता जो आज यहाँ मौजूद नहीं भी है, उन सब की मेहनत, उन सब का लगन और उन सब की दक्षता जो हमारे संस्था की सबसे मूल आधार है, उसके कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग आज दाक्षी में नहीं है या जो सिर्फ सेशन सुनने आए हैं, वो भी दाक्षी के विचार को समझे और दाक्षी के साथ जुड़े। दाक्षी ने मुझे क्या दिया है, ये मैं अगर बताना चाहूँ तो शायद ये पूरा सेशन खत्म हो जाए कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया है दाक्षी से। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि दाक्षी के कारण जो मेरे अंदर की जो एक विचार था कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसको पुनः पढ़े, समझे और उससे हम क्या आज के समय में उसको कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, उस काम को बहुत अच्छे से दाक्षी ने किया है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अभी बताने को कि दाक्षी संस्था कैसे बढ़ी, उसमें मैंने क्या भूमिका निभाई या सारे साथियों ने क्या भूमिका निभाई। बस समय का अपना ये है कि हमें सेशन समय से प्रारंभ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग भी दाक्षी से जुड़े और दाक्षी को एज संस्था आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें और देश में प्राचीन ज्ञान परंपरा का जो लहर है उस लहर में आप भी आगे हमारे साथ शामिल हो और दाक्षी को एज अ संस्था भारत की सबसे बड़ी संस्था बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। Thank you for this wonderful expression, Amit ji. I truly appreciate your all efforts and your helpfulness towards Dakshi. So now I humbly request our respected principal sir to formally welcome our esteemed chief guest and share a few words about this meaningful initiative. सबको नमस्कार।
Honorable Professor Meenakshi Jain ji, esteemed guests, faculty members, dear students, and everyone present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to this special occasion of Gyānparv', the festival of knowledge, commemorating the anniversary of Dakshi. As just now Megha, Isha and Amit ji just mentioned, Dakshi is a movement that seeks to reawaken the ancient waves of India's knowledge systems and cultural heritage. We are deeply honored to have with us today Professor Meenakshi Jain, a distinguished historian and Padma Shri awardee, whose scholarship and insightful perspectives have significantly contributed to our understanding of India's civilizational ethos. Today, she will enlighten us on a subject of profound importance as it goes deep into how historical narratives have shaped perceptions and influenced cultural understanding over time. Madam, your presence here enriches this event, and we eagerly look forward to your thought-provoking address. On this occasion, I would also like to take a moment to recognize and compliment Akshat ji, an alumnus of this very college. I am so proud, who initiated the Dakshi movement. Akshat, your dedication and vision to revive India's ancient knowledge systems and cultural legacy is truly inspiring. Your efforts remind us of the words of Swami Vivekananda, who said, "The more we come out and do good to others, the more our hearts will be purified, and God will be in us." Akshat, you and your great team signifies this spirit of service and selflessness. You just mentioned about the achievements of Dakshi. Your work with Dakshi has brought a new energy to our collective mission of preserving and promoting India's timeless wisdom. Adharaniya Guru Golwalkar ji once said, "A nation must always preserve its culture, for culture is the soul of the nation." The Dakshi movement aligns beautifully with this thought by bringing focus to the rich heritage that forms the backbone of Indian society. It rekindles pride in our traditions while making them accessible and relevant to contemporary times. And to our students, I urge you to take inspiration from today's discussions. Engage deeply, ask questions, and immerse yourself in the rich legacy of India. Let us remember that our knowledge systems are not just relics of the past, but vibrant source of guidance for the future. I express my heartfelt gratitude to Professor Meenakshi ji for her presence and the wisdom she will share with us today. As we move forward with today's program, let us keep in mind the words of Param Pujniya Dr. Keshav Baliram Tirkewaj, who said, "The root of all progress and strength lies in self-reliance and national pride." May Gyānparv' inspire us all to be torch bearers of our great legacy and catalyst for brighter future. Thank you, and let us together make this event a memorable one. Thank you so much, sir, for these beautiful words for our team. Now, before moving forward, we would like to announce one more important thing for us today. The Dakshi's Magazine. The Dakshi's Magazine is a repository of knowledge, presenting insightful articles, research papers, and creative contributions. It covers diverse topics such as ancient Indian political thought, maritime trade routes of the Chola Empire, and the interplay of ancient and modern sciences, with a special focus on areas like performing arts and temple economies. The magazine exemplifies
exemplifies Dakshi's mission to foster scholarly curiosity and intellectual growth. May I now request our Honorable Chief Guest to please unravel the Dakshi's magazine. So, now let's move forward to the most interesting part of today's session. Professor Meenakshi Jain will enlighten us on the historical practice of Sati, drawing from ancient texts to modern interpretations. Her meticulous research encompassing primary sources, colonial laws, and contemporary debates serves as a critical reference for understanding this complex subject. Let us welcome Dr. Meenakshi Jain with a big round of applause. Good morning, am I audible? Yes, ma'am. Good morning to Mr. Khattar, Dakshi, and a warm welcome and congratulations to Dakshi for the anniversary program. Thank you so much for inviting me. The topic of today's talk is a topic on which there is so much confusion, and I'm glad that I've got the opportunity to share some of my research on this subject with you people. You know, the fact that the British got rid of the custom of sati is something that is ingrained in all of us. If you talk to a school-going child, what do you know about William Bentinck? He will say abolition of sati and female infanticide. I mean, this is 100 years after William Bentinck. So, you know, what I want to share with you is how inaccurate and false this notion is, but it was a part of the colonial attempt to devalue our traditions and culture and to give us a feeling of self-loathing. Now, in the initial presentation, I want to make certain points. First of all, you know, when do we hear about sati? I am not saying sati did not exist. I am saying sati was a rare phenomenon. In Indian tradition, the first people who are associated with sati never immolated themselves on the death of their husband. Who was the first sati? Padma. She immolated herself because she said her father had insulted her husband. So there is no self-immolation. Sati Savitri, Sati Anasuya. They are all examples of women who immolated themselves before the death of their husband. So this is one important point that we have to make. I am not saying that sati did not exist. I am saying sati was a rare phenomenon. When we discuss sati, we must answer the question of how much evidence do we have of actual women immolating themselves. How many women were immolating themselves? So the first evidence that we have of sati cannot be denied. It is in the 3rd century BCE. In the time of the invasion of Alexander, we've all heard of Alexander, when he was going back, then near Afghanistan, his Indian contingent, it had a commander, his name was Shashigupta. Now when they were crossing, Shashigupta died, and the Greek soldiers were astonished that his 2 queens came
and started fighting among themselves who will immolate with him. So this is the first evidence that we have of Sati. We cannot deny it because it is an eyewitness and it has 300 BC. When is the next evidence that we have of Sati? It is the Eran pillar inscription in Madhya Pradesh, 500 AD. That means from the first evidence to the next evidence, 800 years gap. In this 800 years, there is no evidence of Sati. So this is just to show how rare it was. Now, this incident, it is there on a pillar, it's in Madhya Pradesh. You can still see it. It is called the Eran pillar inscription. And this is the Eran pillar inscription record that a general in the army, he died fighting, and his widow decided to immolate herself in spite of her parents telling her, please don't immolate yourself. The third instance, which is undeniable, which is true, is in that is early 14th century, the Moroccan traveler Ibn Battuta. He came to India and he saw 3 widows of a soldier getting ready to immolate themselves. What I am saying is that Sati was a rare phenomenon. It was exaggerated, which we will discuss later, but the evidence, as a historian, you and I are looking for undeniable evidence. So we have 3 undeniable evidences in the course of about 1400 years. So the point is, where did this controversy about Sati being widespread in India, where did it begin? It began by mistake in 1795. In 1795, there was an English officer. He later became a great Sanskrit scholar, but this is the first work that he wrote in 1795. The title of that article is The Duties of the Faithful Hindu Widow. Alright? Now he wrote that it is compulsory for a widow to immolate herself according to the Rig Vedic funeral hymn. So he tried to show that there is a religious dimension, a religious directive that a woman has to immolate on the death of her husband, and he quoted this Rig Vedic hymn, which is called the funeral hymn. Alright? So that is when the debate begins that Sati was compulsory according to Hindu religious scriptures, according to Hindu religious texts. But the moment H.T. Colebrook published this article, many other Sanskrit scholars said you have translated this verse wrong. The Sanskrit verse of the Rig Veda says Agre. That Agre he has mistranslated into Agne. Agne is fire, Agre is first. So the funeral hymn said that when a widow, when her husband passes away, she has to first, Agre, first, cover her eyes with ghee, lie down beside that person, and then get up and resume her place in the world. So Agre was translated into Agne, which means fire. So this is where the whole controversy begins in 1795. And it is so tragic that we still have not been able to get rid of this stigma that Hindu civilization ordered Sati. So why did this occur? Why did this mistake occur? Many historians said that it was a mistake, an inadvertent error. Somebody said because the texts were at that time not printed and they were copied by a writer, so maybe that writer made a mistake. The fact of that matter is that from 1795, a widow immolating herself. The words are going with the husband or going after the husband. It is the European travelers in the 18th, 19th century who coined the word Sati
for a woman immolating herself. So Sati began to be used for the woman who immolated herself and for the right of Sati. Is that clear? So we have very, very few instances that I have quoted to you. Now, when do we get figures of Sati which are much more than what we have discussed? There are two episodes in Indian history. One is, you know, that Vasco da Gama discovered a new route to India in 1498. So when that new route to India was discovered, European visitors could come to India. Alright, that was the first. And we have Portuguese traders. They came as horse traders to Vijayanagara Empire. Now this is the time when, you know, printing becomes a big phenomena in Europe. So all these travelers who came to India, they wanted to write books which would sell back in their home country, and they wanted to present sensational views of India. So some of these Portuguese who came said, you know, when the Raja died, hundreds of his wives immolated with him. That is, they have not given any data, they have not given the name of the ruler. And how do I contradict this? Because important visitors to Vijayanagara Empire, like Abdul Razak, he was the ambassador of the Russian king to the court of Vijayanagara. He was a royal guest. He never mentions Sati in his account. People like Pace, Portuguese traveler Pace, they don't mention Sati at all. Alright? So this is something that we have to keep in mind, that why were these accounts raised? I give you the example of the Vijayanagara kingdom, when the passage to India had been opened and many people come and they write to sell their books abroad. Alright? I hope this is clear so far. Now what happens? The next wave of writings on Sati begin in the time of the East India Company. We all know the East India Company. Now you will be surprised to know that in the beginning, the East India Company did not permit any missionaries to operate in its territories in India. If a missionary came to the British territory on a ship, he was sent back on the next ship. Why? Because the East India Company said, we have come to India to make money, not to reform society. We are not here as social reformers. So if you come to preach in our territories, we will not allow you to do that, because it will create disturbance and it will affect our money that we are earning from India. So this is the policy of the company. You know, the East India Company was formed in 1600. So from 1600, the policy of the East India Company is no missionary will be allowed in Indian territory. Now, what happens in the 18th century? You see, in the 18th century, you are all students of history, you would know that there was the revolution in France. The French Revolution, you know that the king and queen were beheaded, their heads were chopped off. So that French Revolution created a real fright in the other countries of Europe, because they did not want this movement to spread to Europe. England was very near France. It was very, very particularly disturbed that the ideas of the French Revolution, the chaos, anarchy, and the execution of the king and queen should not happen in their own country. Alright? And they said that the reason for the French Revolution was Voltaire. You've heard of Voltaire? So they said Voltaire preached irreligion. Because Voltaire did not endorse religion, that is why this revolution happened in France. So they said in England, they said we will not allow such ideas to spread to England. So what is the reason to stop these ideas? How can we stop these ideas? That is by teaching religion to the people.
distributing Bibles in lakhs. So, in the backdrop of the French Revolution, we have the rise of the evangelical movement in England. Now, that evangelical movement says we must make people in England more Christian because they are not Christians, and we must spread Christianity to the colonies that we control in the world, principally India, because India was the jewel in the crown of the British. America was almost being lost. So they said we must spread awareness, we must get the right to convert people in India. So you will be surprised to know that in 1792, the British Parliament debated on whether missionaries should be allowed in India or not, and the British Parliament said we will not allow missionaries to operate in India. So 1792, the British Parliament refuses to give missionaries the right to operate in India. But the missionaries were determined. The missionaries were determined, and so they came quietly to India, and they went to the Danish colony of Shirampur. You've all heard of Shirampur. Shirampur was a small little plot of land that the Danes had purchased, and they said we will allow missionary activity in India. So the first 3 missionaries who came to India, came to Calcutta and quickly went away to Shirampur before the British could contact them, and we remember them as the Shirampur trio. So 3 early missionaries came to Shirampur, and they were the first people to start this agitation against Sati. Now, why did they start this campaign against Sati? Because they had to convince Parliament that we must get the right to conversion in India. You understand? They said that, there is so much evil in India, and the 2 important evils are Sati and female infanticide. So they had to tell England that India is a dark country, a forgotten country, and it's our Christian duty to bring light to the Indians and make them converts. Now, in England, how do you convince Parliament? Because Parliament does not have any adequate knowledge of India. So what they do, you will be surprised to know that the missionaries, they commission a private survey. It is like me commissioning a private survey in Karodima College. How many students are, enthusiasts of left historian? What is my standing? How can I commission a survey without the approval of the principal of the college? I don't have any standing. But these 3 missionaries, they commissioned a private survey. So they appointed 10 people. And they said, divide this Calcutta area among yourselves, and you carry out surveys in your area, and you give us a list of how many people are committing Sati in this area. Now imagine the East India Company doesn't know, the bosses of the East India Company sitting in Calcutta don't know, and these Sri Rampur missionaries commission a private survey. Their agenda, see, I can commission a survey if my intention is decent, but if my intention is to collect information which runs down India and Hindus, then you can imagine how reliable that survey will be. So in any case, they commission a private survey, but 10 people are appointed, and they say you collect the number of satis in each part of Calcutta. Now, you all know as students of history that Calcutta, Bengal was the harbinger of Bengal Renaissance. We all know of Bengal Renaissance, that modern India begins with Bengal. So how is it that you expect
the instances of Sati, on the one hand we say Calcutta was in the forefront in education, in English education, and on the other hand the missionaries are saying collect data on the number of Satis in Calcutta. Have you understood the distinction? I'm giving an example of your college because I'm standing here. I say that Kurodimal College is in the forefront of giving modern education to the students. And then at the same time missionaries come and say Kurodimal College is backward. It is not allowing women to participate in all the activities. So this contradiction. But in any case, in Parliament, in the British Parliament, nobody knew what was happening over here. So the East India Company does not know this. The missionaries commissioned the survey. And what is most surprising is that the results of the survey are presented differently by different missionaries. So one missionary, William Ward, will say 10,000 people were immolating. Another missionary says that it was 5,000 and another say 15,000. So there is total mismatch between the accounts of the various missionaries that were here. We have not till today been able to access the original documents of the surveys that were commissioned by the missionaries. We don't know where those papers are. Alright? So this is one very important lacuna. When we tackle an argument, when we try to answer another side, it is so important for us to be equipped with facts. Because when you are equipped with facts, then it's very easy to demolish. But because we did not study this phenomena for such a long time, every school book in independent India has William Bentinck as the friend of India and the person who abolished Sati and female infanticide. Anyone in this audience, I'm sure none of them will be able to cite a single case of Sati in their families going back so many generations. I know of no Sati in my family, but no, never. And in extended family, nobody committed Sati. So if Sati was so widespread, just ask yourselves the questions that was there any record of any woman in your family committing Sati? You will find no. Now, so this is one aspect. Now they presented these papers to the British Parliament and they said, the widows of India are crying for justice. And they wrote so many pamphlets, depicting India and Hindu society as a real God-forsaken society. So, Parliament was a little alarmed because Parliament did not have any representatives in India. Parliament did not know how to find the facts. There was no TV, there was no journalism. How are they to know? So it never occurred to them that the British missionaries are sending false statements on Sati. Then what happened was that, thank you, then what happened was, I'll take it from there. Then what happened was that when these missionaries' reports were presented in England, then the East India Company in Calcutta thought we must also verify. So the East India Company, that was the headquarters of the British in India, you know that, they commissioned also surveys. So the surveys that the East India Company commissioned, they were not just for Calcutta. They were for Bengal Presidency, Madras Presidency and Bombay Presidency. All the three areas that were under the control of the East India Company, they said we must have surveys in all these. So it is very interesting that when the governor of Madras was asked to prepare a list of the women who were committing Sati, how many figures? So they said, what is this? We've never heard of this. There's no Sati in our presidency, entire Madras presidency, except one or two cases. They
10-15 years ago. In the Bombay presidency also, the governor said, where do we get these figures? Because it's not known. So imagine, 95% of the cases that were registered as a result of the survey commissioned by the East India Company, 95% of them were from Bengal. Why Bengal? Because that was the center of British rule in India. So imagine a Sati which is supposed to be all India. There is no evidence of it being rampant in Bengal, in Madras or Bombay presidency. According to the government figures, 95% of the Satis were in Bengal. Can you imagine? Is it possible? Bengal never had a tradition of Sati. Sati was a custom which was mainly confined to Rajasthan. And because, why was it confined to Rajasthan? Because in the beginning, the woman who immolated was the woman whose husband had died in battle. So the woman felt that my husband has shown such bravery in battle, so let me show a similar bravery, compliment, C-O-M-P-L-E, compliment his bravery in my time. So this was a custom that was related to Bengal, Rajasthan. Even today, Bengal has no temple of Sati, whereas all the temples of Sati are there in Rajasthan and particularly in Shekhawati district, Jhunjhunwadi. So even today, that link is there. So the thing is that when the British company surveys were published, they showed that 95% of the cases of Sati in India were from Bengal. Now that itself should have alerted the East India Company that this is all bogus, this is all fraud. How can a custom be confined only to Bengal, which was supposed to be the leader in Western education, in enlightenment, in social reform? So, how can it be? In any case, these figures were not challenged in the British Parliament because there was no other way to understand what was happening. You understand? Today, we have social media. You can put up anything on social media, so many people will contradict you. There were no newspapers, there were no TV channels. So in the British Parliament, there was nobody to tell the missionaries that you are telling lies, and the survey of the East India Company is also full of it. Now, the next point that I want to raise for you is how is it? I want to ask you, when we say that William Bentinck did this great thing, do you mean to say that Hindu rulers before William Bentinck were allowing Sati in their provinces? Shivaji, his mother said, I will commit Sati when her husband died. Shivaji snubbed her. He said, don't you dare do it. One queen of Shivaji immolated and one queen of his son Rajaram immolated. The Marathas were against Sati. They all said we don't want Sati. The Sikhs, they said we will not permit. There were so many Indian rulers. No Indian ruler was saying in his kingdom that you have to commit Sati. When we give praises to William Bentinck, we have to ask ourselves, were the Hindu rulers saying to their women that you have to immolate? Which Hindu ruler said this? Ahilyabai, we've all heard of Ahilyabai. Her husband died when she was young. And her father-in-law, he said, I will teach you statecraft. Because my son has died, you have to manage the state after I am gone. I will teach you how to run the government. Why don't we discuss these things? Ahilyabai, she built the Somnath temple, she built the Kashi Vishwanath temple, Ujjain temple, so many things she did. Enlightened lady ruler, so enlightened. But her father said, you will not commit
Sati, and I will teach you how to run the government. And he taught. Ahilya became such a celebrated ruler. Ahilya daughter, Mukti Bai, she lost her husband when she was only 10 years old. Ahilya Bai told her, I am sitting before you. I will not immolate, and you will also not immolate. Alright, so this is example. But Ahilya Bai could not persuade her daughter, and it's a very tragic account how Ahilya Bai is pleading with her daughter, don't immolate, but the daughter immolates. So these are very few examples. Daulat Rao Scindia's widow, Baizabai, she was a person who actually, when her husband was alive, she participated in battles against the British, and she was such a leading banker. And when the husband died, she never immolated. And if you go to Gyānparv', that circle, I don't know if you've seen that, that was the gift of of Baizabai. So there are so many examples of qualified ladies, dignified ladies who did not immolate themselves. Before Ahilya Bai and all, I want to give you the example of King Harsha. You've all heard of King Harsha, ancient India. So when King Harsha's father was the king at that time, when he fell ill, and the doctor said that we will not be able to save him, then the king's wife immolated before the death of her husband. And Harsha said, don't do it. She said, I will do it because I've lived like a lioness. And my husband was like a king. Lion. I cannot live without him because I'm used to that status. Harsha tried his best. He could not persuade her. But his mother immolated before the death of the husband. And Harsha's sister, Rajshri, she was going to immolate. Harsha came to know about it, went there, rescued her, and his sister became part of the administration. She helped Harsha. So there are so many examples. The question is, why have we not challenged the British narrative, the colonial narrative of our history, of a very important aspect of our history, all these decades? It's more than a century since Bentinck abolished Sati. How is it that we have not challenged it? That means that there is a flaw in the way we study history, there is a flaw in the way we understand history, and we have unknowingly repeated what the British masters told us. It is time that we got rid of the British narrative and tried to see Indian history through Indian eyes. We've got used to seeing Indian history through imported ideas, imported ideologies, and foreign eyes. If we want to become a proud nation, I'm not saying that everything was perfect. No country is perfect. So the whole point is you do not allow an imported ideology and a foreign power to tell you how you're going to study history. You study history yourself and come to your own conclusions, isn't it? So in any case, what happens is that the figures of the East India Company are presented to the British Parliament, and the British Parliament gives missionaries the right to operate in India for the first time. And soon after that, William Bentinck issues an order abolishing Sati. Alright? Now today, if a government in independent India issues an order saying that there will be no English schools in India, how will this order spread? We have social media, we have newspapers, we have TV, everybody will come to know about it. When William Bentinck abolished Sati, Bengal, which was supposed to be the hotbed of Sati, there is no protest, and Sati, no case of Sati is recorded from the next day. Can you imagine? How does everyone in every village
know that, oh, the great William Bentinck has abolished sati, so there will be no sati. These are obvious errors which we should have caught long before, and we allowed this narrative to continue. That, you know, TV debates, when I used to watch the TV debates, there would be two parties participating in the debate, and one party would tell the other party, भाई आप हमको उपदेश न दीजिए क्योंकि आप तो अपनी महिलाओं को जलाते थे, and nobody from the other side would say भी हम कहाँ जलाते थे, because they were not equipped, they did not know. अगर आपको अपने इतिहास की बारीकी के बारे में नहीं पता होगा, आप दुर्बल होते हैं, आप कमजोर होते हैं. और जो दूसरी साइड है, that goes on riding roughshod over it. मैंने आज तक किसी डिबेट पे, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिबेट होता है, तो विपक्षी पार्टी हमेशा ये बोलती है, आप हमको भाषण मत दीजिए क्योंकि आप तो महिलाओं को जलाते हैं. अब किसी ने टीवी डिबेट्स में, कितने सौयों टीवी डिबेट्स हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड में, किसी दूसरी साइड ने नहीं कहा कि भी हमको फिगर दीजिए कब जलाते हैं, आप सबूत दीजिए कब जलाते हैं. और हमारे ग्रंथों में कहाँ लिखा गया है कि महिला को जलाना है. ऋग्वेद का फ्यूनरल हिम्न जो आप कोट करते हैं, वो अग्रे को अग्नि ट्रांसलेट कर दिया, which was shown to be wrong. Now the thing is that William Bentinck abolishes sati, and बंगाल में, जिसमें 95% of cases of sati were from बंगाल, अगले दिन से एक भी केस नहीं रिपोर्ट होता. और अगर आप मथुरा गए हैं, वृंदावन गए हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर विडोज ऑफ बंगाल इतनी ज़्यादा होती थी, दे विद हेड कट ऑफ, हेड शेव्ड ऑफ. सो बंगाल में जो ट्रेडिशन था कि अगर किसी विडो को संन्यास लेना है, वो अपना head shave करती है, and they would go to Vrindavan. So even today you will find widows from Bengal coming to Banaras. Now you know it is sheer laziness on our part that we have allowed this whole narrative to continue for 100 years. अब I want to present one or two more things to you. इंडिपेंडेंस के बाद जब रूप कंवर का आपने सुना होगा सुसाइड हुआ था, तो उसके बाद विपक्ष ने कहा पार्लियामेंट में कि आप हमारे को फिगर्स दीजिए कि कितनी सतीस हुई है. तो आज़ादी के बाद टिल नाउ इन पार्लियामेंट इट वाज सेड 40 केसेस ऑफ सती हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ. 40 केस हुए हैं, ठीक है. लेकिन 40 केसेस की विशेषता क्या है? एक भी बंगाल से नहीं है. जिसको हमको अंग्रेज बोल रहे थे कि भी बंगाल में तो 95% ऑफ विडोज और हजारों की संख्या में वो इन्वोलेट कर रही थी, तो बंगाल से एक भी केस आज़ादी के बाद नहीं हुआ. कहाँ से केसेस हुए हैं? अधिकांश केसेस राजस्थान से हुए हैं, और राजस्थान से पर्टिकुलरली शेखावत रीजन, झुंझुनू. और आज भी वहाँ पर जो सती टेम्पल्स हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं. बिकॉज आप क्यों सती पर जाते हैं लोग? बिकॉज दे आर वर्शिपिंग द बहादुरी, द वैलर ऑफ द ऑर्डिनरी पर्सन हु इज इमोलेटिंग हरसेल्फ. तो आप इमेजिन करिए कि कोई भी केस बंगाल से नहीं हुआ. Most of the cases are confined to the south. To Rajasthan. So what does this tell us? It tells us that as students of Indian history, अब मैं अपने आप को भी आप में शामिल करती हूँ, क्योंकि मेरे को भी ये सच नहीं पता था जब तक मैंने सती पर अध्ययन करना नहीं शुरू किया. तब मुझे पता चला कि मिशनरीज का क्या रोल है. बंगाल प्रेसिडेंसी में सती कभी प्रचलित नहीं थी. सती वॉज अ कस्टम कन्फाइंड टू राजस्थान. सती को आप जौहर से कभी भी कंफ्यूज मत करिए. सती वॉज एन इंडिविजुअल एक्ट
जौहर वॉज द कलेक्टिवली समूह में औरतें अग्नि में छलांग मारती थी. Why? Because they did not want to be captured by a foreign power. 2 केसेस सती के रिकॉर्डेड हैं. एक तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, so the women said we will not allow ourselves to be captured, so they immolated. And the second was when Akbar invaded Chittor. ये जो 2 केसेस हैं, इसके बारे में हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि पर्शियन इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा. आप समझिए. तो जौहर को सती से मत कंफ्यूज कीजिए. सती इज एन इंडिविजुअल एक्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट सती, आपके साथ कोई डिबेट करता है सती, तो यू टेल देम प्लीज हमारे को फिगर दीजिए, क्योंकि फिगर्स में ही सारा खेल है. अगर पहला सती अलेक्जेंडर के टाइम है और नेक्स्ट रिकॉर्डेड ईरन पिलर इंस्क्रिप्शन में 5th सेंचुरी एडी में है, 800 इयर्स के गैप में, दैट मीन्स सती वाज वेरी लेट. एंड सती वाज नॉट अ कस्टम दैट वाज कन्फाइंड टू इंडिया. प्राचीन सभ्यताओं ने, विश्व की बहुत प्राचीन सभ्यताओं में ये कस्टम थोड़ी संख्या में प्रेवलेंट है. और लास्ट बात मैं कहना चाहूँगी, जब आपसे कोई कहता है कि भाई आप तो सती प्रथा मानते थे, आपको ये प्रश्न जरूर करना चाहिए कि यूरोप में ऐसा क्यों है कि महिलाओं को विचेस को क्या बोलते हैं, विचेस का दर्जा देके आप औरतों की को जलाते. मतलब जो महिला आपकी थिंकिंग से, आपके विचार से अलग थी, तो उसको आप जलाते थे. हम सती के बारे में बात कर रहे हैं और हमने यूरोप में विचेस, महिलाओं को विचेस के रूप देकर उसके ऊपर आपने कोई मिशनरी ने वहाँ पर विचेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया. भारत में सती प्रथा को खत्म करने के लिए जो कभी थी नहीं, आपने आंदोलन किए. आपके अपने देश में, यूरोप में, जब महिलाओं को विचेस का दर्जा देके उनको जला रहे थे, उसमें आपका कोई कमेंट नहीं. लास्ट पॉइंट कि अंग्रेजी शासनकाल में हमको पता है, इतिहासकार होने के नाते हमको पता है कि फैमिन से कितने लोग, मिलियंस ऑफ लोग डाइड. बंगाल में क्योंकि उनको अनाज कहीं और भेजना था, तो 1/3 of the population of Bengal died in the first recorded famine in the time of war and peace. उसके बाद वर्ल्ड वॉर में हमको पता है कि अनाज भारत से बाहर भेजा गया और इतनी यहाँ के इतने लोग मर गए. पार्लियामेंट्री डिबेट, ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री डिबेट्स आप पढ़ेंगे तो इतने विस्तार से ये लिखा गया है कि इतने मिलियंस भारत के लोगों को हमने मारा है बिकॉज ऑफ आवर ग्रेन पॉलिसी. और इसके ऊपर किसी मिशनरी ने नहीं और किसी इतिहासकार ने नहीं, और जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के आलोचक थे उन्होंने इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं किया. The emphasis is on death by Sati. We do not look at death because of British introduced famine. We do not discuss burning of women as satis as witches in Europe. These are all things which will, when we acquaint ourselves with them, we will know that a debate is always two-sided. एक तरफा कभी नहीं होता. ये तो हो नहीं सकता कि सारे तथ्य अंग्रेजों के पास थे और हमारे पास कोई नहीं था. हमारे पास कितने तथ्य हैं, लेकिन इतिहासकार होने के नाते, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री होने के नाते हमको ये सब पता होना चाहिए ताकि हम अपने जो आलोचक हैं उनके साथ बात कर सकें, डिबेट कर सकें. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am, for this enlightening session.
समारोह की ओर बढ़ते हैं, जहां हम उन सदस्यों The session was indeed wonderful. We got insights into the topic of Sati. We'll wait for a few minutes to continue further. Yes, please maintain the decorum. Don't leave the auditorium right away. The students at the back. अब हम पुरस्कार वितरण समारोह की ओर बढ़ते हैं, जहां हम उन सदस्यों को धन्यवाद देंगे जो न केवल दाक्षी का हिस्सा रहे हैं। I request everyone to be seated. I also welcome questions. Is there anyone who has any question for ma'am? Anyone? I hope at least you found some merit in my argument. Anyone who has any question or query can come up on the stage and ask. नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है वो इतना ज्ञानवर्धक जो आपने इतना वक्तव्य रखा है मैम। मेरी बस थोड़ी सी कुछ जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि उपनिवेश से मुक्ति और औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दो अलग चीज़ें हैं। हम तथाकथित रूप से एक आज़ादी हमें प्राप्त हुई 1947 में, लेकिन उसके बाद जो औपनिवेशिक मानसिकता रही कि किसी ने भी उन विषयों पर खंडन तो क्या ही करना था, जो कुछ भी उन लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए, हमारे इतिहास के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के उल्टे सीधे जैसे भी नैरेटिव सिद्ध किए, तो मेरे मन में सिर्फ एक जिज्ञासा होती है कि इतने लंबे समय तक एक ऐतिहासिक प्रतिरोध क्यों नहीं हो पाया। सिर्फ एक जिज्ञासा है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ जी, लेकिन मैं किसी और को दोष नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं भी अपराधी हूँ। मुझे इतना टाइम लगा सभी के ऊपर अध्ययन करने में और उसके बारे में प्रकाशन करना, लेकिन मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रही, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि एक बुक में जैसे आप शीशे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, शीशा टूट जाता है, दोबारा ठीक नहीं हो सकती। तो इसी तरह से मेरी रिसर्च है, वहाँ पे अमेरिका में तो हमारे प्रशंसक बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पर भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उसको एक्नॉलेज किया है, और अब वो ये नहीं कहते कि वे भारत में सती, वो कहते हैं कि लिमिटेड। पहले तो था कि सभी सती कर रहे हैं, so it's very difficult to do research. I totally agree with you, but मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि मैं अपने आप को भी दोषी मानूंगी। नहीं मैम, आपने तो जो किया वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी, पर मेरा कहीं ना कहीं एक मतलब एक मन में रहता है कि हमारे इतिहास विभागों ने, हमारे उन राइटर्स ने उन सच्चाइयों का प्रतिरोध क्यों नहीं किया, और एक लंबे समय तक जो हमें इसका कारण ये है कि विदेशी आइडियल, हमारे जो इतिहास लिखा गया इंडिपेंडेंस के बाद, वो एक विदेशी आइडियल जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय इतिहास को भारतीय नजरों से, भारतीय दृष्टिकोण जी, आपको ये भी पता चला कि भाई वो ऋग्वेदिक जिसका आप पूरे दुनिया में बोल रहे हैं कि रिलीजियस सैंक्शन है, इसमें 2 वर्ड्स
अगर ट्रांसलेट करें so it's a long struggle. I would only say that it's a long struggle. It's a very lonely journey because आपको support करने के लिए कोई नहीं मिलेगा नहीं और doing it, but it's a very important. Thank you so much. आपने दो चीज़ें जो कही मुझे लगता है कि वही सारा कुछ बयान कर देता है। एक तो ये कि रिलीजियस सैंक्शन नहीं था उसका एक भी जगह, और जिस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है ऐसा लगता है कि रिलीजियसली हम उसको सैंक्शंस को हम करते थे। और दूसरा आपने कहा कि फिगर्स नहीं है, जो डेटा नहीं है। अच्छा, आपने ये रिलीजियस का बोला जी, मनु की हम कितनी निंदा करते हैं जी। तो मनु ने लिखा है कि एक पुत्री जब वो छोटी होती है अपने पिता के आंगन को सजाती है, पिता की जिम्मेदारी होती है। शादी के बाद वो पति की जिम्मेदारी होती है, विधवा होने के बाद बेटे की। मनु ने तो नहीं कहा, मनु ने तो नहीं कहा कि भाई उसको सती करना है, तो मनु ने कहा शी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सन। एंड देन द पॉइंट इज दैट मेड थी जिन्होंने मनु के ऊपर इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा है, कहते हैं सती इज लाइक ब्लैक मैजिक दैट यू नो दीस आर द टर्म्स दे यूज। और विच क्राफ्ट एक्ट जो है आपने बताया ही, ब्रिटिश में तो विच क्राफ्ट एक्ट लगा हुआ था और इस एक्ट के तहत लोगों को मारा जाता था, जलाया जाता था। और एक बार किसी को आपने विच प्रूव कर दिया, बस उसके बाद उसको जलाना ही उसके ऊपर का वो होता था, पनिशमेंट होता। और नो बडी, एंड दिस वाज पार्लियामेंट एक्ट। हाँ, दिस वाज अ पार्लियामेंट एक्ट, और उसको हम हमारे खिलाफ हमने ये डिबेट वगैरह में हमने ये क्यों नहीं उठाया कि आप विचेस एक्ट का जैसे आपने कहा उसके बारे में बोल रहे हैं, आप हमारे बारे में बोल रहे हैं वेयर द वुमन वाज सो वेल ट्रीटेड। और सती जो थी, पार्वती ने सती क्यों की? बिकॉज दक्ष हर फादर इंसल्टेड हर। हम अभी भी बोलते हैं ना सती सावित्री, हम ये तो नहीं कहते उन्होंने इमुलेट किया। सती सावित्री मीन्स चेस्ट गुड कॉन्डक्ट, आपका आचरण वगैरह अच्छा है तो आप सती सावित्री। उन्होंने तो इमुलेट किया। अच्छा, जस्ट एक मिनट में आप मुझे बताइए कि रामायण में दशरथ की कितनी पत्नियों ने इमुलेट किया? ठीक है ना, आप इतिहास में ढूंढे ना, आप सबूत ढूंढे। I want to put up one point. Also, Thank you for asking. I think that पूरा मैं आंसर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम। नहीं, कोई नहीं, और भी लोग अपने आप ही पढ़ेंगे सब अपने आप ही सब। but I wanted to contribute a point like in Earthshastra as well. It promoted Judori marriage. Yes, And there is no mention no of mention of Sati. absolutely. Wonderful. I made this point in my book. Yes, sir. Very good point. पूछिए एक तो उसका जल्दी जल्दी। इधर ये लड़के कब से पूछ रहे हैं? Okay, all right. And please, मैम जब आप कह रहे हो आगे 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 तो इधर एक भी हम क्या दिया आगे आगे। मैम जब आप कह रहे हो कि बंगाल में सती सिस्टम नहीं था, तो हम देखते हैं कि राजा राममोहन राय उनका तो मैं आपका प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। तो जब एक और क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे राजस्थान से वेस्ट राजस्थान वहाँ आपने कहा कि जो शेखावटी क्षेत्र में इसमें ज़्यादा सती के मंदिर थे, राजस्थान में भी है, और वो वहाँ के जो गांव में एनलाइट क्लास थी उनके मतलब गांव के जो जैसे राजपूत जो राजपूत कम्युनिटी है, सोल्जर है ना, इनके पति हाँ, सैनिक। बट एक ओबीसी कम्युनिटी जो अभी है बिल्कुल वो जगह है। That is also there. Now you know because of time is short, can I just answer? राम मोहन रॉय, ये एक बड़ी मिथ फैलाई गई है कि राम मोहन रॉय was the one with William Bentinck who abolished service। और इसके पक्ष में ये कहा गया है कि जब उनके भाई की मृत्यु हुई तो उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी उन्होंने इमुलेट किया। लेकिन आरसी मजूमदार, आपने सबने उनका नाम सुना होगा, प्रसिद्ध इतिहासकार। तो प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार ने एक पुस्तक लिखी है, छोटी पुस्तक, उसका टाइटल है राजा राम, और 2-3 और ग्रंथ हैं। उन्होंने कहा कि राजा राम मोहन रॉय
वहाँ पे प्रस्तुत ही नहीं थे जब उनके भाई की सो दिस कंट्रोवर्सी अबाउट राजा राम मोहन रॉय के बारे में अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, बट ही इज अ वेरी डिविसिव, क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहे थे कि इंग्लिश कंपनी ने कहा संस्कृत कॉलेज तिरहुत और नादिया में उन्होंने कॉलेजेस स्थापित किए, तो राम मोहन रॉय ने कहा डोंट गिव अस दिस outdated system, thank you so much, we don't need it, give us English education. तो एक व्यक्ति बहुत कॉम्प्लेक्स, एक विषय पे उसके ऊपर फुल कॉम्प्लीट करना, because what was his role? अच्छा वो इंग्लैंड गए, मुगल बादशाह की विपक्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी से उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस मांगने के लिए राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए. सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड. द थिंग इज दैट एवरी क्वेश्चन हैज मेनी लेयर्स एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. सो वी हैव टू कीप दैट. ऑलराइट. थैंक यू मैम. मैम ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि किस तरीके से एक ब्रिटिश मिशनरी के प्रोपेगेंडा के थ्रू हम सती का प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया गया, बट मैम क्वेश्चन ये था कि आफ्टर 75 और 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वाई वी आर स्ट्रगलिंग, आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि इट वाज अ प्रोपेगेंडा एंड ये रियलिटी नहीं है. प्रोपेगेंडा अभी तक चल रहा था और क्या. एंड ऑल्सो मैम आज भी 5 इयर्स के बाद हम अपने इतिहास टेक्स्ट बुक्स को लिखनी पड़ी, पर मैं क्या करूं. 75 इयर्स ऑफ आजादी के बाद हम वही, मैं क्या कहूँ, बकवास कह सकती हूँ. आप लोगों ने बर्टनस्टाइन का नाम सुना होगा. तो बर्टनस्टाइन की ग्रेट थियरी है सेगमेंटरी स्टेट. अब पूरी दुनिया में वो सेगमेंटरी स्टेट की थियरी रिजेक्ट हो गई, लेकिन हम पढ़ाए जाते हैं. अभी किसमें कौन दोषी है? इतिहासकार भी लोग दोषी हो सकते हैं कि हम इतिहास ही नहीं लिख पाए. यू नो टेक्स्ट बुक्स वही रबिश टेक्स्ट बुक्स. मैम स्टिल मैम आज भी हम देखते हैं कि if any foreign media or if any foreign source present a report on India, then we Indians उसको हम बहुत proudly देते हैं, टीवी पे दिखाते हैं. So how to change this mindset of inferiority complex? अंग्रेजों ने inferiority complex घुसा दिया है that we have to make a conscious effort to prove. मैं आपको क्या उपदेश दे रही हूँ? मैं खुद वामपंथी इतिहासकारों से बड़ी प्रभावित थी जब मैं स्टूडेंट थी और अर्ली ईयर्स ऑफ टीचिंग. फिर कैसे a journey of self-discovery, and now everything is clear before me, because एक विषय पर अगर आपकी आंखें खुल जाएं तो आपकी आंखें सब विषयों पर खुल जाएंगी. But I have great hopes from you. Thank you. सवाल है कि भारत और हम की समस्याओं की बात करें तो जो विद्वानों में जो एक वैचारिक दुराग्रह देखने को मिलता है कि वो हर चीज़ को जैसे जाति के संदर्भ में हम आपने सती की बात की ज्वेलरी से जोड़ देते हैं, जाति के संदर्भ में मनुस्मृति ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, और अभी आपने सती के संदर्भ में. लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इन्वेजन्स वगैरह हुए उसका उसके थियोलॉजिकल एस्पेक्ट की चर्चा नहीं करते हैं. फिर दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है. I can go on talking about this for hours. It's a very valid question, but maybe something. But it's a very important, intelligent, and very valid. Beautiful. Let's stop now. Ma'am, if you You said 2 more questions. No, ma'am. Actually, I was asking the few. Okay. That you can. जैसे आपने कहा था कि अगर हम अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते तो कहीं ना कहीं हम दुर्बल होते जाते हैं. तो हिस्ट्री को जाने कैसे? क्योंकि जब हम राइटर पढ़ते हैं सबके अलग अलग व्यूज निकलते हैं और सोर्स कहीं ना कहीं सब एक हो जाते हैं. I am a victim of left historiography. Yes, I really मैं पढ़ाती थी. But what I am saying is that I don't regard myself as a victim. You know, I think I have made a contribution to society to showing them the path. मैं आपसे ये, you know, social media has played. You are empowered because it's social media. जब मैं छोटी थी तो social media नहीं था.
तो अब आप कोई भी अपने इलाके का इतिहास एक शॉर्ट वीडियो बना के पेश कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम अ विलेज, विलेज के कस्टम्स, विलेज में त्योहार कैसे मनाते हैं, कौन से लोग हैं, तो ये इस तरह से ना जो फ्यूचर है जनरेशन ऑफ हिस्टोरियंस है उनके लिए ये रॉ डेटा। तो मैंने अभी मैं कोयम्बटूर में थी, तो वहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा था विचार होते हैं और तो वहाँ के सारे लोग, तो मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बोला, मैंने कहा इसको आप डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हो सकता है 20 साल के बाद ये प्रथा खत्म हो जाए, तो एविडेंस क्या होगा, मतलब इन द सेंस द कस्टम्स आर सो ब्यूटीफुल। अच्छा, सारे अभी मैं एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हूँ, तो एजुकेशन वॉज लिंक्ड टू द नीड्स ऑफ द विलेज। आप इमेजिन करिए कि पाणिनि की ग्रामर किसी विलेज स्कूल में पढ़ाई जा रही हो बच्चों को, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एलिवेटेड हमारी एजुकेशन सिस्टम थी, जबकि हमारे पास कोई पैसे नहीं थे और कोई स्टेट सपोर्ट। तो ये जो विलेज के लोग थे, and it is so moving, I'm just diverting from the topic। तो क्या होता था कि शिक्षक अपमान समझता था अगर वो किसी स्टूडेंट से पैसे, और उनकी बहुत मॉडेस्ट नहीं होती, तो लेकिन उनको कैसे उनके पेरेंट्स कॉम्पेंसेट करें। तो कोई पेरेंट एक मुट्ठी चावल देता था, कोई अपने घर में कोई बड़ी पूजा है तो उनके लिए वन पेयर ऑफ क्लोथिंग देता है। एक टीचर के बारे में उनका स्टेटमेंट भी है, द टीचर सेड मेरा जो थोड़ा सा जमीन है, तो मेरे विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम आपको हफ्ते में 2 दिन आपके कुछ कहते थे कि यहाँ पे खाली जमीन है, तो यहाँ पे हम स्कूल बनाए मिट्टी का, और वो बच्चे कैसे मतलब इन सेंस ऑफ कम्युनिटी और टिल इंडिपेंडेंस इतने सारे सबूत हैं वेयर एवरीवन राइट टू द ब्रिटिश एंड दे से कि हमको अंग्रेजी सीखनी है क्योंकि उससे हमारे को नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति हमारी वर्नैक्युलर लैंग्वेज और संस्कृति जुड़ी हुई है, आप हमको उससे मतलब इतनी अवेयरनेस थी। मैं इसको जब पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम क्या थे और क्या बनते। मैम धर्मपाल जी ने जो एक किताब लिखी है रमणीय वृक्ष ब्यूटीफुल ट्री, वो मतलब कभी भी सिलेबस में क्यों नहीं लगाई, जबकि वो फैक्ट्स धर्मपाल जी ने बहुत पहले, और वो ब्रिटिश पीरियड की जो रिपोर्ट्स बिल्कुल It's a very good book. So the point is that हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए, but in the real sense अभी हमको आज़ादी मिले बहुत समय। When we get back to us, I am not saying कि भाई आप वापस जाइए, you have to move with the time, but at least appreciate your ancestors। अंग्रेजों को they had no power, they are writing petitions to the Englishmen that we don't want to deprive ourselves of our जो हमारी प्रांतीय भाषा वो हमको रखनी है। So I mean it's beautiful history that we have. Unfortunately, we have not been shorted, but I would request all the students over here to prepare small videos and upload them on Navratri in your village. तो जाते होंगे Yes, ma'am. दिवाली कैसे सेलिब्रेट, कौन साज हैं जो कभी रामायण का पाठ कौन आते हैं, उनका सच ब्यूटीफुल एपिसोड हम आप पास से That is what we are doing right now. Absolutely. क्योंकि आपके पास सबके पास अब टीवी है, वो टेलीफोन है, तो आप सब इंडिपेंडेंट और आप वैसा डेटा कलेक्ट करेंगे जो आने वाले इतिहास का। Thank you, ma'am.
definitely enrich our knowledge, understanding about Sati and the history. And there's one more thing which we would like to know. अब हम पुरस्कार वितरण समारोह की ओर बढ़ते हैं, जहां हम उन व्यक्तियों का धन्यवाद करेंगे जो न केवल दक्षी का हिस्सा रहे हैं, बल्कि इसके विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे ईशा शर्मा, अमित कुमार, राकेश कुमार, कार्तिक यादव, हर्ष सोनी एंड हर्ष तोमर। Thank you so much. Thank you so much. Guys, please be seated, guys. आप लोग बैठ के एक पिक्चर ले लो यहाँ से। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। All the volunteers, all the Dakshi volunteers are requested to please be on the stage. Be in front of the stage, all the volunteers. All the students are requested to please be seated for the second session. We'll start in a while. थोड़ा सा delay होगा. अगर आपको दक्षी का थोड़ा और डेकोरेशन देखना है एंड इफ यू आपको विजिट स्टॉल्स तो आप कैंटीन में जा सकते हैं. आपको कुछ खाना ना हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं. बट आप जहाँ पर जल्दी आ जाइए. जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए वी आर नॉट कंफर्म कि जो रिजर्व रहेंगे. अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया हो तो आप लोग या तो आप बैठे रहिए अपनी सीट पे या तो आप जल्दी आ जाइएगा. प्लीज डिले मत करिएगा.